Okay, back again, guys. Good morning again. So Virag has joined, Shrutika, Darshika. Come on, waiting for others. Fast. Pooja has joined. Mamta, are you joining right now? Yes, Vijita has joined. Sonia has joined. Drashti, welcome back. Deepika has joined. Yes, Ankita. Himanshi. You were not there in the morning session, Himanshi. Saili has joined. Anjali, Dimple. Yes, Damanjeet ma'am joined. Khushbu has joined. Vijeta, Sneha. Come on, guys. Last 2 minutes I wait. Nishank, welcome back. Diksha is there again. Okay, welcome back fast. Okay, we'll be starting this session in a minute now. Urvi, you were not there in the morning session. Himanshi, you were not there in the morning session, I guess. And Mamta, you weren't there in the morning session. Okay, Shilpa has there. Okay, guys, let's begin now. Welcome back to the part 2 of this session now. In the part 1, which all chapters we finished? Can anybody tell me? We did SAPM, dividend policy, we did leverage, and we did cap structure. So in the part 2, we are going to do COC and cap budgeting.
That is our priority for the part 2 session. So here comes the COC question, and we are on question number 5. Okay, come to question number 5. Calculate the WACC using the following data by using book value as weights and market value as weights. Let's see the capital structure of the company. We have debentures with a face value of 100, 5 lakh rupees, preference share face value 100, 5 lakh rupees, equity share face value 10, 10 lakh rupees. Total we have the capital structure of 20 lakh rupees. They have given the market price of debenture is 105, preference is 110, and equity is 24. Additional information is 3 points. Rupees 100 per debenture redeemable at par, 10% coupon rate. Coupon is the interest. 4% flotation cost, 10-year maturity. For preference, it is 100 per preference share redeemable at par, 5% coupon rate, 2% flotation, and 10-year maturity. Equity, rupees 4 as the flotation cost, and market price of 24 per share. The next year, expected dividend is rupees 10, and annual growth is 5%. The firm is paying all earnings as dividend. Tax rate is 50%. So that is all about the question, and we are going to calculate WACC. So how are you going to do WACC? That is the weighted average cost of capital. First we will start as book value weights. I hope all of you remember the columns and the presentation the way I do. Our first column is sources, amount, our third column is proportion, our fourth column is COC, and our fifth column is WACC. Now there are how many sources in this question? 3. So we have debentures, we have preference shares, and we have equity shares. Okay, the book values are 5 lakh, 5 lakh, and 10 lakh. So total of the book value is 20 lakh rupee. Let's take the proportion. Everybody 5 lakh divided by 20 lakh. Come on, proportion nikalo. 5 lakh divided by 20 lakh. This is question number 5. I repeat for those who are joining late for this live streaming. Please everybody find the proportion. 5 lakh upon 20 lakh. Yes, Shilpa, Virag, Diksha, all of you are correct. It is 0.25, 0.25 and 0.5. So total of the proportion is 1. Come on, now we are going to find COC. Yes, Sonia, Mamta, the answers are correct. Now we are going to find the cost. तो पहले डिबेंचर्स का करना पड़ेगा, तो हम KD कैसे फाइंड करेंगे?
पहले मुझे बताओ, डिबेंचर्स रिडीमेबल है कि इरिडीमेबल है? डिबेंचर्स रिडीमेबल है कि इरिडीमेबल है? डिबेंचर्स रिडीमेबल है कि इरिडीमेबल है? यस दीक्षा, शिल्पा, दे आर रिडीमेबल। अगर रिडीमेबल है तो कैसे करते हैं? लेट मी शो यू। इट इज आई इंटू 1 - t प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स the whole upon redeemable value plus net proceeds upon 2 into 100. So they are redeemable. Vijeta, they are redeemable. Please, you will have to write the notations. I stands for the interest rate, T for the tax rate, RV is the redeemable value, NP is the net proceeds, and small n is number of years. So let's substitute this. Everybody, if you see, the coupon rate is 10% interest rate on 100 rupee. 100 rupee पे 10% कैसे आएगा? Obviously it is 10. 1 minus the tax rate is 0.5 plus redeemable value is at par, so it's 100 minus net proceeds. उन्होंने क्या बोला था? 100 रुपये का डिबेंचर जब इश्यू हुआ था तो 4% फ्लोटेशन कॉस्ट था, तो 4 रुपीज़ माइनस कर लो, उसको फ्लोट करने के लिए हमारा 4 रुपया खर्चा हुआ था. सो माई नेट प्रोसीड्स इज 96 अपॉन डिबेंचर्स ऑफ 10 ईयर मेच्योरिटी, तो अपॉन 10 upon 100 plus 96 upon 2 the average into 100. Let's solve this. 10 into minus is 5 plus 0.4 upon 98 into 100. So it is 5.4 divided by 98 into 100. It is 5.5102%. Is everybody getting the same answer? 5.5102%. Is everybody getting the same answer? सो डिबेंचर्स के यहाँ पे आप लिख दोगे 0.055102 becomes the cost of capital. Yes, दीक्षा, निशांक, उर्वी, डिम्पल, तो हमने केडी निकाल लिया. एवरीबडी प्लीज राइट डाउन द केडी पार्ट. Everybody's got till here. Now we'll find KP. KP कैसे निकालेंगे? डिविडेंड, उसमें 1 माइनस टैक्स नहीं होता है बिकॉज डिविडेंड इज ऑलवेज पोस्ट टैक्स. Rest the formula remains the same.
I hope everybody knows the dividend rate is 5%. So it is 5 plus 100 because they are redeemable at par. Flotation cost is 2%. So the net proceed is 98 upon how many years maturity? It's also 10. Please calculate the cost of preference shares. I have substituted the values. And it is 5.2525. You want more of the screen, Virag? 1 second. Now Virag, I have just increased the size of my screen. Diksha, it is 5.2525. You have written 5252. Okay, so it was a mistake. Okay. Mamta is getting the same answer. Virag, is the screen okay now? Yes, Nishank, 5.2525. So Dimple is also getting the same answer. I will just go on the top part of my solution and substitute 0.052525. And now I'll find cost of equity shares. That is KE. KE में dividend growth approach से find करूँगा. It is D1 upon P0 plus G. So next year expected dividend is rupees 10. That is D1, growth rate is 5%. What is the current price of the share? It's 24. So everybody, 10 divided by 24. Is it 0.4667? Please everybody see 0.4667 आ रहा है KE. Okay, Diksha. So just go back and substitute 0.4667 and now multiply the proportion with the cost. And take the total. Is nothing but 0.2602. Multiply by 100 is 26.02. Please check your answers of WACC.
I've got the WACC for this sum, 26.02%. I've got the answer, 26.02%. Please check your answers. So Urvi has got the answer, Vijeta, Dolly, Nishang. Deepika. Dimple, Diksha. Sonia has got it. Saili has got it. Virag wants the KE part. Okay, Virag, here is the KE part. Please note it down. Kushbu has got the answer. Virag, I am on the KE screen for you. Mamta has got the answer. Okay, Pooja Tiwari has got the answer. Virag, have you finished with the KE part? Virag, have you finished with the KE part? Okay guys, so that was the first part of the sum, the book value. By the way, the sum had the second part also, market value weights. They had market value weights. So Darshika has also got it. So guys, एक और बार करेंगे same sum. Obviously, okay, Imanshi has got the first part. Guys, the columns will remain the same. Debentures, preference shares and equity shares. The COC will remain the same. Amounts will change. Come on guys, debenture आपके पास 5 लाख था, उसका फेस वैल्यू 100 था, मीन्स यू हैड 5000 डिबेंचर्स, बट व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर? इट इज 105. So multiply 5000 into 105. So you get 5,25,000 as the amount.
Everybody can hear, everybody can hear me now. Good morning, good morning, good morning, good morning everybody. Sorry guys, the battery cell died off. The battery cell died off, but I was doing the market value, and I hope all of you know the market value. मार्केट वैल्यू मैंने सॉल्व किया है, आप मुझे WACC का आंसर ला के दो. Okay guys, please get me the answer for the WACC market value. दीक्षा, इट विल बी इंटू 100. जो भी आंसर आएगा परसेंटेज में आएगा, लाइक लास्ट वन. Please check your answers and let me know what are the answers fast. क्या बात है, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है. खुशबू 33 पे है, सोनिया 48.86, Urvi and Khushbu are getting the same answers. Nishank and Dimple are also getting the same answers. सोनिया, तूने कहीं प्रॉब्लम किया है. Shrutika and Drashti and Ankita are also getting the same answers. Nidhi is also getting the same answer. I guess Diksha and Sonia, please rectify. दीक्षा ने तो आंसर भी डिलीट कर दिया है. ओके, सोनिया गॉट इट. दमनजीत मैम, सेम आंसर. एंड येस, इट इज द सेम आंसर, 33.89. It is 33.89. Yes, Anjali. दीक्षा आया.
ओके कर रही है. ओके वंस यू आर डन लेट मी नो गाइस. 33.89 जब सबका आ जाए तो मुझे बोल देना. Okay, so that's 33.89. Manshi, if you can't hear me, just log out and log in. भूषण गुड मॉर्निंग. कहाँ थे सुबह से? भूषण गुड मॉर्निंग. ओके टेक केयर भूषण, टेक केयर. Vijeta, you haven't got this answer. Okay, so what you have to do Vijeta, 0.1511 है तेरे पास. ठीक है. अब हमारे पास कॉस्ट कहाँ लिखी थी हमने? ऊपर देख 0.055102. इसको मल्टीप्लाई करना है. फिर सेकेंड वाला तुझे क्या करना है? 01583 के साथ तुझे किसको मल्टीप्लाई करना है बेटा? 0.052525. और थर्ड वाला तुझे क्या करना है? 0.6906 आई एम सॉरी इंटू 0.4667. देखो ये मल्टीप्लाई करके 3 आंसर आएंगे. जो भी आंसर आएगा उसको इंटू 100 कर देना है. प्लीज डू इट विजेता. देख आंसर आएगा. दीक्षा आएगा. कम ऑन दीक्षा. विजेता ओके विजेता आ गया. दीक्षा तुझे भी आ जाएगा बेटा. ओके दीक्षा आ गया. दर्शिका डन. ओके सो हियर वी कंप्लीट गाइस द चैप्टर ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑल्सो. कनिष्का गुड मॉर्निंग बेटा. गुड मॉर्निंग. इतना लेट कहाँ से हो गई तू? Okay, so at this stage you finished SAPM, dividend policy, leverage, cap structure, COC. So guys, it was been a very productive morning. In around less than 3 hours we have done 5 chapters. I repeat, in less than 3 hours we have done 5 chapters. So it's been a very productive morning so far. So good. I hope all of you are enjoying and finding it useful. All of you are enjoying and finding it useful. You all are efficient, Anjali, not me. Okay, we have Saili, Dolly, comfortable, Deepika.
Okay, we have a question from Sonam Panchmiya. If reserves are given in the question, so how to calculate as per book value and market value? Sonam, there is no change. जैसे नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हैं ये वाला उस वैसे ही करेंगे, बिकॉज रिजर्व्स आएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, आपके कॉलम्स तो वही बनेंगे. यू विल हैव प्रपोर्शन, यू विल हैव COC एंड यू विल मल्टीप्लाई इट. Okay, so as I told you, we have finished the 5 topics since morning, and now we are doing one of the most crucial topics, which is capital budgeting. So guys, if you notice what all we have done, yes Nishank, you are absolutely right, KR is equal to KE. We have done question number 5. प्लीज़ सब लोग देख लीजिए हमने क्या कर लिया है. 5, 6, 7, 8. We have done all 4 of them. 5, 6, 7, 8. Then we have done 12, 13, 14. So we have done these 7 questions since morning. And now we come to capital budgeting. Oh, Shilpa, guys, wait. Shilpa says that there is a flotation cost in that question in equity which I didn't notice. Really sorry, guys. Shilpa, thank you for pointing it out. Shilpa, really thank you for pointing it out. Genuinely, I didn't read it. And because of which the solution will undergo a change. अगर 24 है और फ्लोटेशन कॉस्ट है तो यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस होगा एंड अकॉर्डिंगली KE विल चेंज. सो योर KE शुड बी 0.55. Shilpa, thank you for pointing it out. I didn't notice the question. 0.55. Hi Anjali, how are you? Thank you Shilpa once again. Please everybody remember one thing, whenever there is flotation cost, just subtract it from the price while calculating the KE. वहाँ पे नोट लिख दो. Kanishka, we will take the flotation cost while cost of equity as well as cost of reserves. Correct. While reserves flotation cost का जरूरत नहीं है क्योंकि reserves को float करना ही नहीं पड़ता है. Kanishka, you are correct. But क्योंकि ये सब में equity था तो I had to take it, but I just missed out that point from the question. Thank you once again Shilpa. नहीं तो काफ़ी लोगों के पास रॉन्ग सोल्यूशन हो जाता. Okay, I hope everybody has made that necessary changes, and let's come to capital budgeting. Everybody on first question of the book. Everybody on the first question of the book. This is the 6th chapter of today. I repeat, this is the 6th chapter of today. What we are doing it. Let's start question number 1. XYZ is a manufacturer of high quality running shoes. Devang, the president is considering computerizing the company's order inventory and billing procedures. Great. तो हमें computerization करना है. He estimates that the annual savings from computerization would include a reduction of 10 clerical employees with an annual salary of 15,000 each, plus rupees 8,000 from reduced delay
caused by raw material inventory problems. 12,000 from lost sales due to inventory stockouts, and rupees 3,000 associated with timely billing procedures. ये चारों उसका saving है. I repeat, all the four is saving. So by the time मैं अपना यहाँ पे मैं सिर्फ सेविंग्स पहले लिख देता हूँ. सेविंग्स इन सैलरी is 15,000 into 10, it is 1,50,000. Savings due to reduced production delay is 8,000. Savings due to lost sales जो नहीं होगा is 12,000, and savings due to timely billing is 3,000. The total gross savings is 1,73,000. The total gross savings is 1,73,000. So I hope Anjali you are enjoying. So 173 is the gross saving. अब इन्होंने क्या बोला है? The purchase price of the system is 2 lakh. Yes Diksha, that's the right answer. And installation cost is 50,000. टेक्निकली 2.5 लाख रुपया मेरा कैपिटल कॉस्ट है. सो रिमेंबर वन थिंग, अगर मेरा कैपिटल कॉस्ट मैं देखूंगा तो माई कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 2 लाख. प्लस मैंने उस पर 50,000 खर्चा किया इंस्टॉलेशन. सो 2,50,000 इज माई कैपिटल कॉस्ट. दैट इज वन पार्ट ऑफ इट. आगे उन्होंने बोला है दीज आउटलेस विल बी कैपिटलाइज्ड और डेप्रिशिएटेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस. रिमेंबर डेप्रिसिएशन इज SLM मेथड एंड देयर इज नो मार्केट बुक सैल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 years. बट ये जो पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ दिया है इन्होंने, दैट अगर मैं कंप्यूटराइज सिस्टम लूंगा ना तो मुझे 2 कंप्यूटर स्पेशलिस्ट लगेंगे विथ अ एनुअल सैलरी ऑफ 40,000 पर पर्सन. तो ये तो सेविंग होगा कंप्यूटर की वजह से, पर उसकी वजह से मेरे कुछ एडिशनल खर्चे भी बढ़ेंगे. मुझे कंप्यूटर स्पेशलिस्ट रखने पड़ेंगे विच इज़ 40,000 इंटू 2 80,000, प्लस मेरा कंप्यूटर का एनुअल मेंटेनेंस जो आएगा, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट दैट्स 12,000. So can anybody tell me what is my net savings? What is my net savings? Can anybody tell me what is my net savings? Yes, Diksha, Drashti. It is 81,000. That is my net savings. Yes, Sonia, Saili, Nishank, Shilpa, Damanjeet ma'am. All of you are right. It is 81,000. Yes, Vijeta. Okay. Now they are saying 40% is the tax rate and cost of capital rate is 12%. Yes, Mamta, it is 81,000. They are saying you are required to find the project's initial net cash outlay. First answer. तो बताओ outlay कितना है? ये रहा, मैंने निकाल के रखा है. First answer. First answer. Title लिखो, project's initial net cash outlay 2,50,000. Everybody please write down the first answer. Project's initial net cash outlay 2,50,000. Everybody's got the first answer.
Okay, the second question is find the project's operating and terminal value cash flow over its 5-year life. So here it is. This is the answer for the part 2. 81,000. Kanishka. For the part 2, the answer is 81,000. Please, part 1 and part 2 we have done. Everybody is done with part 1 and part 2. Let's go to part 3. Evaluate the project using NPV method. So I repeat, the part 3 is the NPV method. Now, part 1 answer again didn't get it. विराग 2 लाख का मशीन और 50,000 इंस्टॉलेशन आ गया ना 2,50,000. पार्ट 1 में तो इतना ही था. विराग 2 लाख का मशीन 50,000 इंस्टॉलेशन, तो नेट कैश आउटले 2,50,000. ओके गाइस, एवरीबॉडी पार्ट 3 एनपीवी. सो एनपीवी कैसे निकालेंगे? विल फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. कितने साल का समय? 5 years. तो मैं लिखूंगा ईयर 1 to 5. कैश इनफ्लो 81,000 है. शुड आई टेक 81,000? इफ आई टेक 81 राइट है क्या वो? क्या मैं सेविंग्स को ही मान लूं कैश इनफ्लो? आई रिपीट, कैन मैं सेविंग्स को कैश इनफ्लो मांग सकता हूं? यस डॉली, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. सो प्लीज रिमेंबर, बिफोर डूइंग एनपीवी यू कांट, ये नॉर्मली लोग गलती करते हैं. आपको कैसे करना है? ऐसे देखो, आपका नेट सेविंग कितना है? 81,000. उसके बाद डेप्री माइनस करना है. कम ऑन, व्हाट विल बी द डेप्री? सो एवरीबडी फर्स्ट कैलकुलेट द डेप्री. ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन लाइफ. सो 2,50,000 माइनस सैल्वेज इज 0 डिवाइड बाई 5. सो डेप्री इज 50,000. सो दैट्स 31. 31 का नाम आएगा NPBT. उसमें से टैक्स माइनस होगा. व्हाट विल बी द टैक्स? कितना परसेंट टैक्स है सब में बताओ? 40%. सो 31,000 into 40%. You have 12,400. So you get 18,600 is the NPBT, NPAT, I'm sorry. NPAT में you will add back the depreciation. So boss, final answer is 68,600. Final answer is 68,600. That becomes the cash inflow. That becomes the cash inflow. 68,600. Yes, Diksha, Shrutika. Please get the cash inflow fast.
Everybody is getting 68,600. Dolly, we add back the depreciation for the depreciation tax benefit, because depreciation is a non-cash expenditure, so we have to add back the tax benefit on it. Okay, once you get this, now you can start the third part. Present value of cash inflow, year 1 to 5. Take the discounting factor. Yes, दीक्षा. ओहो, दीक्षा ने तो 12% का फैक्टर निकाल के रखा है. प्लीज एवरीबडी दीक्षा का फिगर चेक करके बताओ. Is it 3.6047? Even I am getting the same, Diksha. So you get 2,47,288. Round off करके you will get the present value of cash inflow. Dolly, I just answered your question. Dolly, I repeat. It is to give the effect to depreciation tax benefit, because depreciation is a non-cash expenditure. Yes, Shrutika, the answer is correct. 2,47,282, 288 आएगा देखो. प्रॉपर्ली मल्टीप्लाई करो श्रुतिका. Now this is the final answer. Obviously अभी तक NPV बाकी है, तो NPV is present value of cash inflow upon present value of cash outflow. And it is negative 2712. NPV is negative. NPV is negative. Negative 2712, third part. We have the fourth part, that we have to calculate profitability index. That is present value of cash inflow upon present value of cash outflow. So 247,282 divided by 2,50,000. So it is 0.989:1. The profitability index is 0.989:1. Please check your fourth part. Everybody, 0.9891:1. Yes, Mamta, NPV is correct. Profitability index का आंसर चेक करो. And the fifth part of the question is payback period. कैसे निकालते हैं उसको? Total cash outflow upon annual cash inflow. So 2,50,000 divided by 68,600. That is nothing but 3.644 years. Payback period check करो, point number 5. Please check your answers for point number 5, payback.
Please check your answers for point number 5, payback period. So Mamta getting the same answer, Virag getting the same answer. Point number 5. Dolly, don't round it off, the payback period को round off मत करना Dolly. Khushbu Kalola got the answer. Nishank. Okay, now the sixth part. Find the project's cash flow and NPV, parts 1 through 3. Assuming that the system can be sold for 25,000 at the end of 5 years, even though the machine is worthless in terms of its resale value. मतलब ये हमको वापस 1 2 3 पार्ट्स वापस करवा रहा है. पॉइंट नंबर 1 2 3. ये लोग ये बोल रहे हैं कि अज्यूम दैट द सिस्टम कैन बी सोल्ड फॉर 25,000 एट द एंड ऑफ 5 years, इवन दो द मशीन इज वर्थलेस इन टर्म्स ऑफ इट्स रीसेल वैल्यू. मतलब ये पार्ट हमें क्या करने बोल रहा है? पार्ट 6 हमें बोल रहा है कि आप फर्स्ट पार्ट से वापस करो. तो अपना फर्स्ट पार्ट क्या था? नेट कैश आउटले. वो तो चेंज नहीं होगा. हमारा पार्ट 2 क्या था? 68,600. वो भी चेंज नहीं होगा. पर हमारा पार्ट 3 क्या था? वो एनपीवी वाला पार्ट था. ये चेंज होगा. कैसे चेंज होगा? क्योंकि हमें पीवी ऑफ सीआई वापस निकालना पड़ेगा. कैसे? सी ईयर 1 to 5 आप सीआई लोगे. जहाँ तक मुझे याद है डिस्काउंटिंग फैक्टर 3.6047 था एंड दिस वाज 247 282. यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि 5th ईयर में सैल्वेज आ रहा है. 5th ईयर में 25,000 का सैल्वेज आ रहा है. तो हमें 5th ईयर का फैक्टर लेना पड़ेगा विच इज 0.5674, which is nothing but 14186. now 14186 की वजह से मेरा पीवी ऑफ सीआई चेंज होके 261 468 हो जाएगा. प्लीज चेक करो. डिस्काउंटिंग फैक्टर विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. यस डिम्पल. 261 468 and then you will find out PV of CI minus PV of CO. 261 468 minus 250,000 and you get NPV is 11,468. that becomes your NPV. Please. Yes Diksha, you got the right answer. Yes, Mamta, Sonia, Virag. So that was the first comprehensive question on capital budgeting. Dimple, the discounting factor rate will be given to you in the question. Nishank has got the same answer. Waiting for others to confirm the answers fast. Okay, Dimple.
खुशबू करेक्ट, साइली डन, दीपिका डन, शिल्पा डन, ओके. तो लेट्स प्रोग्रेस फर्दर गाइस. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1. कम टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑन लीजिंग. ओके, Himanshi has got the answer, Urvi has got the answer. Okay, question number 2 on capital budgeting. Now this is leasing guys, leasing. Hypothetical Limited is planning to have an access to a machine for a period of 5 years. Company can either have the access through leasing or it can borrow the money to buy the machine. Tax rate is 50%. अगर हम लीजिंग करेंगे तो एनुअल लीज रेंट लगेगा 1,20,000 फॉर 5 years और बाकी सारा खर्चा तो लेसी उठाएगा. ठीक है. अगर हम परचेज करेंगे तो उसका कॉस्ट है 343,300 और उसके लिए हमें 14% पे लोन लेके वो लोन 5 साल तक भरना पड़ेगा. मशीन का डेप्रिसिएशन एसएलएम पे लेना है, सैलवेज 0 है. हमको पूछा है लीजिंग करना है या बोरोइंग. ओके गाइस, टेल मी वन थिंग, लीजिंग वर्सेस बोरोइंग में हम लोग पहले कौन सा पार्ट सॉल्व करते हैं एग्जाम में? विच इज द पार्ट वी सॉल्व फर्स्ट? लीजिंग वर्सेस बोरो में विच इज द पार्ट वी सॉल्व फर्स्ट? करेक्ट, वी सॉल्व लीजिंग फर्स्ट. So part 1 is to lease the asset. Part 1 is to lease the asset. 5 years है. लीज रेंट है 1,20,000. ऑब्वियसली लीज रेंट कहाँ डेबिट होता है? पीएनएल में. तो हम इस पर टैक्स बेनिफिट लेंगे. ऑब्वियसली टैक्स रेट आपका 50% है, सो इस पर 60,000 का टैक्स बेनिफिट मिलेगा. तो व्हाट इज द नेट कैश आउटफ्लो? ऑब्वियसली 60. क्या किया आपने? सब्ट्रैक्ट कर दिया. यू विल मल्टीप्लाई विद द डिस्काउंटिंग फैक्टर. हाउ विल यू गेट द डिस्काउंटिंग फैक्टर बॉस? इन्होंने सम में केडी दिया है 14%. केडी मतलब डेट का रेट 14 है. सो आप कैसे करोगे? आपको पता है ना, केडी इज आई इंटू 1 माइनस टी. सो 14% को टैक्स रेट लगा दोगे, सो आपको मिलेगा 7%. इन शॉर्ट आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर मिल गया 7%. अभी 7% का 5 years के लिए फैक्टर निकालो. And you should get it 4.1002. And you will get present value of cash outflow as 2,46,012. Please check your answers for leasing. Please check your answers for leasing. Vijeta, it is 0.07. Please check your answers till here. विराग, निशांक, शिल्पा,
Everybody's got the same answer? Yes, Urvi? कहाँ हो बाकी सब? यस खुशबू? ओके, आई प्रिज्यूम सबका आंसर लीजिंग तक आ चुका है. पार्ट 2, to borrow and buy the asset. So if you borrow and buy the asset, the Sonia, Deepika, Himanshi, Anjali, Bhushan, everybody's got it. So borrow and buy the asset के लिए क्वेश्चन में क्या दिया है? आपका कॉस्ट है 3,43,300. तो पहले तो आपको इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालना पड़ेगा. हाउ विल यू गेट दैट? It is the amount of loan what you take divided by 1.14 for 5 years. So 3,43,300. Everybody for 1 divided by 1.14 for 5 years gives you 3.433. So that becomes 1 lakh rupees. Has everybody got the same answer? Please check करो. Has everybody got the same answer for equated annual installment? Everybody's got 1 lakh. ओके, अगर ये 1 लाख मिल गया तो आपको क्या करना है? आपको रीपेमेंट स्केड्यूल बनाना है. सो ईयर 1, 2, 3, 4, 5. ओपनिंग प्रिंसिपल कितना था? 3,43,300. तो पहले उस पर इंटरेस्ट लगेगा 14% पे. विजेता, इट इज 1 डिवाइड बाई 1 पॉइंट द इंटरेस्ट रेट. क्वेश्चन में 14% दिया. देख बेटा फर्स्ट पैराग्राफ में. विराग, here it is. Formula is amount of the loan upon 1 point the interest rate raised to 5 years. Diksha, it will be exactly 1 lakh. Everybody is clear till here? Everybody is clear till here? कैल्सी चलाओ बेटा हिमांशी. 1 डिवाइड बाई 1.14 इज इक्वल टू एम प्लस इज इक्वल टू एम प्लस. ऐसा 5 टाइम्स करना है और फिर MRC दबाना है. विजेता, विराग, हिमांशी.
ओके, एवरीबडीज गॉट इट. लेट मी गो एट देन. तो यहाँ पे पहले आप 3,43,300 पे 14% इंटरेस्ट लोगे. सो यू विल गेट 48062. अब आपको अपना EAI तो मालूम है, इट इज़ 1 लाख. EAI इंक्लूड्स प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट. तो उसमें से आपका इंटरेस्ट माइनस कर दो, तो जो बचा वो आपने प्रिंसिपल रीपे किया. अगर प्रिंसिपल रीपे किया तो क्लोजिंग प्रिंसिपल कितना बचेगा? 343,300 माइनस 51,938. सो आपका क्लोजिंग प्रिंसिपल आएगा 291,362. नाउ दैट क्लोजिंग प्रिंसिपल बिकम्स द ओपनिंग प्रिंसिपल ऑफ द नेक्स्ट ईयर. फिर वापस उस पर 14% लोगे, विच इज 40791. 1 लाख तो 1 लाख ही रहेगा. So 1 lakh minus 40791. So next year you will repay 59,209 as principal. So your closing principal for the second year will be 2,32,153. That 232,153 becomes the principal of the third year. उस पर अगेन यू विल टेक 14%. सो यू लैंड अप पेइंग इंटरेस्ट ऑफ 32501. सो 1 लाख में से इफ 32501 वॉज इंटरेस्ट, सो यू आर पेइंग 67,499 एज योर प्रिंसिपल. एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल लेफ्ट आउट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर is 164,654, which becomes the opening of the fourth year into 14%. So you pay up 23,052 rupees as interest out of 1 lakh, which is your installment. So technically you pay 76,948 as principal. So now your principal outstanding is 87,706. Now you will again take 14%, which is 12,279. Now this is 1 lakh. So 1 lakh minus 12,279 is 87721. बट इसको 0.6 ही लेना पड़ेगा ताकि ये माइनस हो जाए, ताकि ये ज़ीरो आए. सो डिफरेंस जो आया आपको विच इज़ 15 रुपीज़, वो 15 रुपीज़ आपको इस फिगर में एडजस्ट करना है. सो 1 लाख माइनस 87,706 विल बी 12294. इट शुड बी द फाइनल फिगर. एंड दैट इज हाउ यू विल मेक द लोन रीपेमेंट स्केड्यूल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. आज का धमाल टाइप था ये repayment schedule. Please note this down. Please note this down, everybody, fast. Once you are done, let me know.
Sonia done, Nishang done. नहीं खुशबू 85 नहीं आएगा, प्लीज चेक विथ माय फिगर्स. ममता चलेगा ये फिगर्स. ₹1 इधर उधर होगा तो चलेगा. ईयर 5 का इंटरेस्ट 1 लाख में से 87,706 माइनस करना है विजेता. डिम्पल, दीपिका डन, अंजलि डन. Sally done, Vijeta done. Come on fast, let me know. Kanishka done. Okay, if this is done, let's complete the part 2. So part 2 में पहले you will write here, then you will write principal, interest and EAI. So यहाँ पे मुझे कॉपी करना पड़ेगा ऊपर से फिगर्स. प्रिंसिपल इज 51938. इंटरेस्ट इज 48062. ऐसे पूरे फिगर्स कॉपी करो वापस. 59209 and 40791. Then it is 67499 and 32501. And it is 76948 and 23052. The last one is 87706 and 12294. Okay, so once you are done this, उसके बाद you will find out the tax benefit on interest and depreciation. Now interest, obviously if I am not wrong, the tax rate is 50%. So सब interest का 50% कर दो. 48062 का half
that is 24031. So 40791 का 50%, 32501 का 50%, 23052 का 50%, 12294 का 50%. So 50% कर दिया. Don't forget to find the depreciation. So 3,43,300 minus salvage is 0. Life is 5. So depreciation is 68660. उसका भी 50% because टैक्स बेनिफिट का रेट है 50%. Now you will write the net cash outflow. So it is nothing but 1 lakh minus the tax benefit on interest minus the tax benefit on depreciation. So you get 41639. So again second wala is 1 lakh minus 20396 minus 34330. So it's 45274. Third is 1 lakh minus 16251. So it is 49419. Fourth is 1 lakh minus 11526. It is 54144. And fifth one is 59523. Now you know the discounting factor is at the rate of 7%. तो अभी 7% का फैक्टर लिखना है 0.9346, 0.8734, 0.8163, 0.7629 and 0.7130 and multiply these figures and get me the answer of present value of cash outflow. Get it fast? Get it fast? मैं स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ ताकि यू कैन राइट. Yes, I give you full screen now. नेट कैश आउटफ्लो डॉली माइनस करके आया है. इट इज 1 लाख EAI माइनस इंटरेस्ट माइनस डेप्रीसिएशन.
माइनस किया है, देखो ये तीनों फिगर को। Okay, what is the answer, Mamta? Two zero two five four five. Is everybody getting the same answer which Mamta has got? Vijita, I didn't get your question. Deepika is getting again 202545. Diksha is getting some other answer. Nishank is getting 202541. Shilpa 202545. It has to be, guys, 202545. अगर नहीं आ रहा है तो आपने कहीं कैल्सी में मिस्टेक किया है. It is 202545. And now you have to compare this 202545 with this answer 246012. इसमें से कौन सा चीप है? ऑब्वियसली सेकेंड वाला चीप है. तो आप क्या एडवाइस करोगे? बोरो एंड बाय. दैट शुड बी योर एडवाइस. प्लीज राइट द फाइनल आंसर. बोरो एंड बाय. Please write down the final answer. Borrow and buy. Everybody is written and finished the sum. Mamta, your answers are different because you are taking different decimal points. If you take the same decimal points what I have taken, you will get the same answer. Everybody is done? डिम्पल, नहीं, आंसर गलत है बेटा. मैं वापस बोल रहा हूँ. प्लीज सी द नंबर्स विच आई हैव रिटन ऑन द स्क्रीन. Himanshi, no, I didn't get your doubt.
Himanshi, I didn't get your question. Depreciation is 68660. Cost minus scrap value divided by life. I repeat guys, if you take different decimals you will get different answers. आपका आंसर अगर 100, 200, 300 रुपये प्लस माइनस हो रहा है मीन्स यू आर टेकिंग डिफरेंट डेसिमल्स. The right answer for this sum is 202545. Okay, now let's move ahead. So these were first two important questions on capital budgeting. Now let's take one small one first, which is question 4, and then we will take question 3. Himanshi, we will always calculate, we will never take the figures which question gives us. Himanshi, we will always calculate and take the figures. Question number 4, risk analysis and sensitivity analysis. Okay, great, Dimple finally आ गया. So your Delta Corporation is considering an investment in one of the two mutually exclusive projects. Project A, उसका initial cash outflow है 1,70,000. Project B, उसका present value of cash flow है 1,50,000. They have also given the certainty equivalent approach is employed. The current yield on treasury bills is 5%, and company uses this as the riskless rate, that is the RF rate. Expected value of net cash inflow with the respective certainty equivalents are. Project A year cash inflow certainty equivalent. मैं प्रोजेक्ट ए करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए. So here I am doing project A. पहले लिखूंगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, फिर कैलकुलेट करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. ईयर है 1, 2, 3. कैश इनफ्लोज आर 90, 1 lakh and 1,10,000. Certainty equivalents are 0.8, 0.7, 0.5. No, Kanishka, this difference is not acceptable. You have to get the answer what I am writing. क्योंकि आप अलग अलग डेसिमल अलग अलग पेपर में अलग अलग जगह नहीं ले सकते. इट हैज़ टू बी यूनिफॉर्म. कैश इनफ्लो इनटू सर्टेनिटी इक्विवेलेंट करूंगा तो मुझे रिस्क एडजस्टेड कैश इनफ्लो मिलेगा. So 9 8s are, here I will get 72,000, here 70,000 and here 55,000. उसके बाद I will take the discounting factor, and that is nothing but the risk-free rate of return, that is 5%. एंड आई होप अभी आपको पता है कि फैक्टर आपको डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक लेना है.
and you multiply this and get present value of cash inflow, and then please find out NPV for me, present value of cash inflow minus present value of cash outflow. Please do this for project A as well as project B and get me the final answer. दीक्षा तूने क्या आंसर टाइप कर दिया उधर? दीक्षा, what is the answer you type? अच्छा, वो ऊपर का वैल्यू. Please get me the final answer of project A NPV and project B NPV. मल्टीप्लाई करके ऐड करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. What is the total of PV of CI, Diksha? Diksha, what is the total of PV of CI? Diksha and Mamta, please give your total of PV of CI. यहाँ पे पहला फैक्टर आपका आया होगा 9524 and this answer is 68571. This is 0.9070. The total is how much? Final answer 9570. फाइनल आंसर 9570. ना 70 का 7172 चलेगा, पर 9570 का 9370 नहीं चलेगा. ओके, ना प्रोजेक्ट बी, प्लीज टेक द क्वेश्चन. प्रोजेक्ट बी करो फटाफट पूरा खुद से. सी हैव गिवन यू द क्वेश्चन स्क्रीन. प्लीज डू द प्रोजेक्ट बी फास्ट.
Please do the project B fast. Yes, Kanishka, you are right. Kanishka, Saili, Shilpa, Dimple, Nishank. Come on, do the second one, guys. Yes, Dolly. चलो सेकंड वाला करो अभी फटाफट, प्रोजेक्ट बी करो. क्या आंसर आ रहा है बॉस? व्हाट इज द एनपीवी? 44,276. अंजलि, अंकिता, खुशबू, 44,276. साइली, निशांक, हिमांशी, आशा, उर्वी, थोड़ा सा देख, 6 रुपए का फर्क आ रहा है. Guys, project B, NPV is 44,276. So everybody has got the answer? Great. Now let's see the question. अब ये पूछ रहे विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेबल. कम ऑन, कौन आंसर देगा? कौन आंसर देगा? विच प्रोजेक्ट विल बी एक्सेप्टेबल? प्रोजेक्ट ए की प्रोजेक्ट बी? यस विराट, दीपिका,
Come on now, answer me. Which project will be acceptable to the company? Yes, Nishank, Shilpa, Vijeta, Kalola, and Dolly. The answer is project B. Because NPV is higher. Yes, Himanshi, Shilpa, Deepika, Diksha, Dimple, because of higher NPV. Yes, Sonia, Damanjit ma'am correct है, Kanishka correct है. The first answer is project B. Can anybody tell me? Ankita, yes, the answer is correct. Now, please stop. Come to the question number 2. Which project is riskier and why? Explain. कौन सा प्रोजेक्ट रिस्कियर लग रहा है? Which is a riskier project? Which is a riskier project? Can anybody guess? Which is a riskier project? Can anybody guess? Yes, Diksha, I agree with you. Lovely, Bhushan. Diksha, Bhushan, can you give me the reason why A? Shilpa, can you tell me why A? Yes, Diksha, your answer is also correct. Because उसका certainty equivalent कम है. That's the reason it is riskier. You are right. Yes, Bhushan, you are right. Shilpa, correct. Mamta, you are wrong. Lower the certainty equivalent, it is not good for the company. ममता, तुमने ऑपोजिट आंसर बोला है बेटा. And what is the last question? If the company was to use the risk adjusted discount rate method, which project would be analyzed with a higher rate? किस वाले को अपन हायर रेट से लेते? अगर रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट लेते तो कौन से प्रोजेक्ट को हायर डिस्काउंटिंग रेट पे लेते? Anybody with the third question? Dolly, to answer your question, or if it's a rupee, 2 rupee, 5 rupee, 10 rupee difference तो ठीक है.
बट 100, 200, 300 नहीं चलेगा. Come on, anybody with the third answer? Anybody with the third answer? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा रिस्कियर है? चलो ये बताओ, मैं समझाता हूँ थर्ड पार्ट. कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा रिस्कियर है? यस विराग, प्रोजेक्ट ए ज़्यादा रिस्कियर है. अभी अभी हमने देखा, क्योंकि उसके पास लोअर सर्टनिटी इक्विवेलेंट है. सो प्रोजेक्ट ए इज लेस रिस्कियर, करेक्ट? और मोर रिस्कियर, ऑब्वियसली इट इज़ मोर रिस्कियर. अगर प्रोजेक्ट ए ज़्यादा रिस्की है तो उसमें डिस्काउंटिंग फैक्टर ज़्यादा हाई लेना पड़ेगा. सो ऑलवेज रिमेंबर, रिस्कियर द प्रोजेक्ट, यूज हायर डिस्काउंटिंग फैक्टर. एंड देयरफॉर थर्ड का आंसर आएगा प्रोजेक्ट ए. थर्ड आंसर प्रोजेक्ट ए. थर्ड आंसर इज प्रोजेक्ट ए. Third answer is project A. So everybody has got it. So here we complete the third question of capital budgeting, and now we move on to the last question of capital budgeting. That is the replacement method. Come to question number 3. Question number 3. Everybody on question number 3 now. Everybody on question number 3. Ready? Last one on capital budgeting. Ready everybody? Saili ready? Anjali ready? Diksha ready? Okay. So let's read question number 3 now. Prithvi Limited is a manufacturer of a variety of electrical equipments. The existing machine is based on old technology. In order to improve the quality of the product and to bring down the operating cost, the management is planning to replace the existing machine with the new machine. Now they've given you various information. Existing machine was purchased 5 years ago. उसकी रिमेनिंग लाइफ है 5 years, मतलब टोटल लाइफ हो गई 10 years. सैल्वेज वैल्यू उसका मिलेगा 20,000. डेप्री SLM मेथड
उसका आज का बुक वैल्यू 3 लाख, बाजार में देंगे तो 3,50,000, उसका एनुअल डेप्रीसिएशन 28,000। ये पुरानी मशीन के डिटेल है। नई मशीन के लिए कैपिटल कॉस्ट लग रहा है 10 लाख, उसका यूजफुल लाइफ है 5 years और उसका सैलवेज है 1 लाख। अब ये क्या बोल रहा है, द रिप्लेसमेंट मशीन वुड ऑब्वियसली गिव अस आउटपुट एक्सपांशन। एज ए रिजल्ट सेल्स हमारा 1 लाख रुपए से बढ़ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 2 लाख रुपए से कम हो जाएंगे। इसके लिए मुझे एडिशनल इन्वेंटरी खरीदनी पड़ेगी, बट मेरे क्रेडिटर्स 50,000 से कम हो जाएंगे। टैक्स रेट 30%, डिस्काउंटिंग फैक्टर 12%। एडवाइस कि हमें रिप्लेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। टेल मी वन थिंग, ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको क्या मेथड सिखाया है, उस मेथड को क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट डिसीजन में मैंने कौन सा मेथड कराया है? What is the method called as? Yes, Vijeta, we have to compare the old and new, but what is the method called as? Very good, Drashti. Proud of you. Hypothesis method. Drashti, you are gonna clear this attempt, yes? फिर CS दृष्टि रामबिया कहलाएगी ना तू। सो रिप्लेसमेंट मेथड में मैंने हाइपोथेसिस मेथड कराया है। हाइपोथेसिस मतलब हम ये बिलीव करेंगे कि हम तो रिप्लेस कर ही रहे हैं, मतलब हम तो ये मानते हैं कि वी आर रिप्लेसिंग द मशीन। अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं तो हम पहले पार्ट में क्या लिखते हैं, कौन बताएगा? पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। चलो 10 लाख रुपए की नई मशीन है, हम रिप्लेस करेंगे तो ओल्ड का एक्सचेंज वैल्यू मिलेगा। ओल्ड का एक्सचेंज वैल्यू कितना मिलने वाला है, कौन बताने वाला है मुझे ओल्ड का एक्सचेंज वैल्यू? व्हाट इज द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द ओल्ड वन? कितना है ओल्ड का एक्सचेंज वैल्यू? What is the exchange value of the old one? Yes, 3,50,000, Nishank. सो माई 6,50,000 आएगा यहाँ पे मेरे पास। ओके, जब मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे ये भी तो निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीन। तो मेरा ओल्ड मशीन का बुक वैल्यू कितना है, 3 लाख, और मेरा एक्सचेंज वैल्यू यानी कि सेल वैल्यू है 3,50,000। ऑब्वियसली मैं उस मशीन को प्रॉफिट में बेच रहा हूँ 50,000, उसके ऊपर मैं टैक्स रेट लगाऊंगा। तो व्हाट इज़ माय टैक्स रेट? इट इज़ 30%, विच इज़ 15,000।
ये 15,000 का जो मेरा टैक्स रेट होगा, ये ऑब्वियसली मेरा टैक्स आउटफ्लो होगा. सो आई विल ऐड इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी 15,000. सो ये मुझे आया 6,65,000. आई गेट 6,65,000. अच्छा, ये तो कर लिया, बट नाउ इसकी वजह से मेरा एडिशनल इन्वेंटरी 2 लाख से बढ़ेगा और 50,000 से मेरा क्रेडिटर्स कम हो जाएगा. टेल मी वन थिंग, मेरा वर्किंग कैपिटल पे क्या अफेक्ट हो रहा है? व्हाट इज माय वर्किंग कैपिटल? इज इट इंक्रीजिंग और इज इट डिक्रीजिंग? अब मेरा ये दो स्टेटमेंट की वजह से मेरा वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? कम ऑन टेल मी, इसकी वजह से मेरा वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? What is the effect on my working capital? Okay, Drashti says it is 2 lakh minus 50,000. दृष्टि एक बार वापस से पढ़ना बेटा ध्यान से. दीक्षा, साइली, खुशबू, हिमांशी, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट. वो इंक्रीज हो रहा है, पर मुझे ये बताओ अंजलि, यू आर राइट, इट इज इंक्रीजिंग, बट कितने अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है? दीपिका, इट इज इंक्रीजिंग, बट विथ व्हाट अमाउंट? Himanshi also believes, the Drashti believes. Drashti and Himanshi are on the same page. Urvi, Darshika, मुझे अभी एग्जैक्ट चाहिए अमाउंट. Nishank also believes the same way. Dimple says only 50,000. She is not counting the inventory. Diksha also believes only 50,000. Virag says 2,50,000. Virag has a separate answer. Virag, can you give me the reason for the same? Virag, Saili, Shilpa are on the same page. Can anybody explain me the reason behind it? कनिष्क का इंक्रीज हो रहा है, बट कितना हो रहा है वो सवाल है अभी. Virag, Saili and Shilpa, can anybody explain me the logic behind it? साइली, इट इज नॉट डेटर्स. अकाउंट्स पेएबल मतलब क्रेडिटर होता है साइली. साइली, अकाउंट्स पेएबल का मतलब क्रेडिटर होता है. कनिष्का, नो, योर आंसर इज रॉन्ग. दीपिका, इट्स रॉन्ग. भूषण इज रॉन्ग. ममता इज रॉन्ग. No, inventory does not get set off against operating expense, Diksha, because Diksha, you didn't read the question well. I am afraid यहाँ पे पर ईयर लिखा है और यहाँ पे पर ईयर नहीं लिखा है, तो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते बेटा.
Yes, Mamta, now it is correct. Dimple now is correct. Guys, इन्वेंटरी बढ़ा मतलब वर्किंग कैपिटल बढ़ा, और क्रेडिटर कम हुआ तो भी वर्किंग कैपिटल बढ़ा. मतलब टेक्निकली दिस इज इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 2 लाख प्लस 50, टोटल 2 लाख 50 इंक्रीज हो गया. सो दिस इज 6 लाख 65 प्लस 2 लाख 50. फाइनल आंसर 9 लाख 15. प्लीज कंप्लीट दिस. फाइनल आंसर 9 लाख 15. कनिष्का, यू कांट डू नेट ऑफ क्योंकि एक पर ईयर है और एक पर ईयर नहीं है. प्लीज राइट डाउन 2 लाख 50. यस सोनिया, नाउ यू आर राइट. प्लीज कंप्लीट दिस पार्ट. Okay, everybody is done with the first part. Everybody is done with the first part. Okay, now let's move on to the second part. The second part is cash inflow. कैश इनफ्लो मैं कैसे करूँगा? सेल्स 1 लाख से बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 2 लाख से कम हो रहा है. सो रिमेंबर, इंक्रीज इन सेल्स प्लस डिक्रीज इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. मेरा इनफ्लो 3 लाख से बढ़ गया. माई इनफ्लो इंक्रीज बाई 3 लाख. यहाँ पे एक नोट लिखना पड़ेगा क्योंकि दे हैव नॉट गिवन द पीवी रेशियो. तो हम ये मान लेंगे कि इंक्रीज इन सेल्स इज इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन. नीचे नोट लिखना पड़ेगा दैट इंक्रीज इन सेल्स इज इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन. नाउ आउट ऑफ दिस सेविंग्स हमें डेप्री माइनस करना है. सो डेप्री कैसे लेंगे? ओल्ड मशीन का अलग, न्यू मशीन का अलग. न्यू मशीन का 10 लाख माइनस 1 लाख अपॉन 5. सो इट इज 1,80,000. और ओल्ड का डेप्री इन्होंने दिया हुआ है, प्लीज कैलकुलेट मत करना, प्लीज कैलकुलेट मत करना, दिया हुआ है. सो द एडिशनल डेप्रीसिएशन इज 152. So my net EBIT or NPBT is 148 minus tax at the rate of 30% is 44,400.
So my NP80 is 103,600 plus add back the depreciation again. So you get cash inflows 2,55,600. Please get the cash inflows 2,55,600. Please complete the cash inflow 2,55,600. Has everybody completed till here? Okay. Everybody is done till here? Okay. Moving ahead with the third part, that is present value of cash inflow. We are doing for 5 years. We have to take the discounting factor at the rate of 12%, and in the fifth year में क्या हो रहा, फिफ्थ ईयर में आप लिखेंगे 3,50,000. कैसे 3,50,000? आपका वर्किंग कैपिटल 2,50,000 वापस आएगा प्लस 1,00,000 का सैलवेज वापस आएगा. तो फैक्टर लेना पड़ेगा 1 डिवाइड बाई 1.12 फॉर 5 years, that is 3.6048 राउंड ऑफ करके. एंड यहाँ पे यू टेक 0.5674. So here you get 9,21,387, and here you get 198,590. You total it and you get 111,997. That is 11,19,997. And fourth में you take NPV. NPV is present value of cash inflow minus present value of cash outflow. 11,19,977 minus 9,15,000. Final answer 204,997, and because it is positive, your answer is replace the machine. Your answer will be to replace the machine.
Please replace the machine. Everybody is done. Everybody is done now. Final answer is to replace the machine. Remember, working capital हमेशा वापस आ जाता है, प्लस सैलवेज तो आता ही आता है. तो 5th ईयर में आपको जो लेना था वो आपको स्ट्राइक होना चाहिए एग्जाम में. सो दीक्षा डन, कनिष्का डन, दीपिका डन, खुशबू डन, वो 977. yes अंजलि, 204977. yes. विजेता डन, अंजलि डन. कम ऑन अदर्स फास्ट, लेट मी नो क्या स्टेटस है. दर्शिका, निशांक, उर्वी, कनिष्का, सोनिया, दमनजीत मैम, शिल्पा, डिम्पल, भूषण, हिमांशी. Okay guys, with this we finish the chapter of cap budgeting. Now we are left with only and only 3 chapters: working capital, derivative and forex. तो पहले क्या करना है बताओ. Working capital, derivative, forex. 3 chapters are left for the day. Everything else is done. Working capital, derivative, forex. So that is done guys. We have done question number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now we are on question 9. Working capital बचा है. सोनिया says working capital पहले कर लो. शिल्पा वर्किंग कैपिटल, अंजलि वर्किंग, डिम्पल वर्किंग. कौन फॉरेक्स मांग रहा है भाई? खाना नहीं खाओगे लगता है आज. दीक्षा, हिमांशी, साइली, निशांक, फॉरेक्स. कैन वी डू फॉरेक्स आफ्टर लंच ब्रेक? Can we do forex after lunch break guys? क्योंकि फॉरेक्स के लिए तो डेरिवेटिव पढ़ाना ही पड़ेगा. Okay, so let's do working capital first, and then we see what time we just have one more break, and then last session finish part 3 of the session. I will be completing the syllabus. So guys, what time you require lunch break? Lunch break क्या time पे चाहिए? What time you want lunch break?
भाई ये तो आपका काम का चीज़ है, खाना वाना खाने वाला चीज़ है. What time guys you need a lunch break? And that will be the last break. विराट बोलता है लंच के बाद ऑल 3. नहीं नहीं यार, इतना जल्दी खाना कौन खाता है? 12:30 मुंबई में कौन खाना खाता है यार? Okay, so I think so we should be finishing working capital and then take a lunch break. I think so that sounds better. Sonia, I agree with you on this. पोस्ट लंच हम सिर्फ डेरिवेटिव फॉरेक्स करेंगे. यस, टेंटेटिव टाइम 1:30 रखते हैं गाइस. लेट्स स्टार्ट वर्किंग कैपिटल देन. कम ऑन. Third last chapter of the day, working capital. Let's begin. Everybody ready on question 9? Everybody ready on question 9? Okay, let's read the question. Astella Garment Company Limited is a famous manufacturer and exporter of garments to the European countries. The finance manager of the company is preparing its working capital forecast for the next year. After carefully screening all the documents, he collected the following information. Production during the year was 15 lakh units, and same level of activity is to be maintained in the current year. The expected ratios of cost to selling prices are material, labor, overheads 40, 20, 20. Okay. Then they have given you the period. The period is raw material remain in stores for 3 months. WIP is 2 months. It consists of 100% material, labor and overheads. This is an important adjustment. Finished goods remain for 3 months, creditor 4 months and debtors 3 months. Cash 2 lakh, outstanding wages half month, outstanding overheads half month. Selling price is 10 rupee per unit, and you also have to make a provision of 10% of contingency except cash. So now let's start with this sum, क्योंकि नीचे का इंफॉर्मेशन काम का नहीं है. एवरीबडी रेडी विद द वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट? पहले फॉर्मेट बनाएंगे हम. I guess everybody knows that we start with current assets. इन करंट असेट्स हम क्या क्या लिखते हैं, कौन बताएगा? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ WIP में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, then stock of finished goods, then debtors and then cash. This is our format. यहाँ पे हम कैलकुलेशन शो करेंगे. ओके, टू शो द कैलकुलेशन, रिमेंबर वन थिंग, पहले हम क्यू निकालेंगे, दैट इज A अपॉन 12. 15 लाख इज माई एनुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई 12, ताकि मुझे मंथली प्रोडक्शन मिल जाए. So your monthly production is 1,25,000 प्लस हम यहाँ पे कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे. मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स gives us total cost plus profit gives me selling price. So selling price is 10. So this is 422 because 40%, 20%, 20% and profit is 2. तो ये मिल गया मेरा कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड मेरे यूनिट्स रेडी है. तो लेट मी जस्ट गो बैक.
So everywhere first I will write my units. One 25, material का rate is 4, labor is 2, overheads is 2, stock of finished goods is valued at total cost, so I take 8, and debtors are valued at selling price, so I take 10. Into the period is given to you in the question. Raw material stock 3 months, WIP 2 months, so 2 2 2. Finished goods 3 months, debtors 3 months, and cash is 2 lakh direct. So come on, let's multiply. So 15 lakh, this is 10 lakh, this is 5 lakh, this is 5 lakh, so outer column 20 lakh, this is 30 lakh, and this is 37 lakh 50,000. So total is 1 crore 4 lakh 50,000 is your total of current assets. Please check, total of current assets is 1 crore 4 lakh 50,000. Everybody is getting the same answer, 1 crore 4 lakh 50,000. Please everybody check your answer, 1 crore 4 lakh 50,000. So Anjali got the answer, 1 crore 4 lakh 50,000. Okay, so now you can take up the next one, that is the current liability. Okay, everybody on current liability now. फर्स्ट नाम होता है क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, now creditors for raw material,
I guess Mamta has already got it. क्रेडिटर का पीरियड क्या था ममता? क्रेडिटर इज 4 months, राइट? So yes, Mamta, you are right. It is 20 lakh. Mamta has already got it. Outstanding wages and expenses का भी फिगर निकाला है उसने. So 1,25,000 into 2 into half. And Mamta, you are correct. So total of B is 22.50 lakh. 22.50 lakh. So your working capital is total of A minus B, that is 82 lakh. उसमें 10% कंटिजेंसी ऐड करना है, पर कैश को एक्सक्लूड करना है. सो 82 lakh माइनस 2 lakh पे 10%, विच इज़ 8 lakh. तो फाइनल आंसर इज 90 lakh. I think so Dolly has already got the answer. Dolly has already got the answer. No? Okay, Mamta, Diksha. Please complete. The answer is 90 lakh. Dimple, 90 lakh. Vijeta, 90 lakh. Nishank done. Sonia done. Himanshi, you want the current asset part, okay? ये रहा हिमांशी, करंट असेट का स्क्रीन. Urvi got 90 lakh. Saili is done. Bhushan done. Deepika done. Vijeta wants the working note screen, okay. Kanishka also wants the same. Here it is, the working note screen. Vijeta and Kanishka. Kushbu, Kalola done. Vijeta and Kanishka, please write down the working notes. Virag is done. Darshika is done. Kanishka is done. Vijeta, have you finished writing this?
Shrutika is done. Okay guys, let's finish it now. So here we have finished the question. बाकी नीचे क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं. So we have done question number 9, the first question, working capital. Let's do the simple one now. One is EOQ. Please come to question number 10, EOQ. Please come to question number 10, EOQ, economic order quantity. Everybody on question 10, let's read. Priyanka Limited requires 2000 units of an item annually. So this becomes A. The cost of the item is 20 rupees. Ordering cost is 50. This ordering cost is nothing but CA. Carrying cost is 25% of 20. That's nothing but 5 rupees is CI. Find optimum lot size, that is EOQ. So हम EOQ कैसे ढूंढेंगे पहले? So we are on question 10, by the way. You use the formula 2ACA upon CI. So it is 2 into 2000 into 50 upon 5. Please don't forget to write the notations. And your EOQ is 200 units. So पहले तो EOQ आएगा. EOQ आने के बाद इन्होंने पूछा है if the company purchase in the lots of 1000 or more and he gets a discount of 3%, should the company accept the offer? Yes, Diksha, the answer is 200 units. EOQ का अभी हम लोग को कंपेयर करना है between our EOQ and the offer. इसके बीच में कंपैरिजन करना है. I hope everybody remembers the format in which I do this. I will first write annual requirement, which is 2000, divide by Q. जैसे यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 1000 है. Okay. So यहाँ पे you will get the number of orders. So you get 10 orders and you get 2 orders. You multiply the number of orders with the ordering cost. So you get this as 500 and 100. That is your A part, total cost of ordering. Now we do calculation for CI. CI is 20 का 25%, which is 5. And यहाँ पे इस 20 रुपीज़ में पहले 3% डिस्काउंट मिलेगा, फिर 25% होगा. So 20 minus 3% and then उसका 25%. So here the CI is 4.85 in the offer. अब आप टोटल कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री कैसे निकालते हो? Q by 2 into CI. That is 200 divided by 2 into 5. And यहाँ पे 1000 divided by 2 into 4.85. So ये हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री. थर्ड कॉस्ट हम लेते हैं परचेज कॉस्ट. Purchase cost is 20 and this is 19.4 into annual requirement is 2000 units. So here it is 40,000 and here it is 38,800. So this is C, total purchase cost.
Now what is total cost? It is A plus B plus C. So here it is 41,000. In the EOQ and in the offer it is 41,325. ऑफर लूँगा तो मुझे 325 महंगा पड़ेगा, तो हम लिखेंगे डोंट टेक द ऑफर. फाइनल आंसर इज डोंट टेक द ऑफर. So please write down the solution, guys. Question number 10. Okay, do you want me to take to the back screen? पहले EOQ लिख लो. After write the EOQ, please write down this. This was very very important part. एग्जाम में लगातार आ रहा है. Every time this comes for exam. डॉली पार्ट बी CI. CI मतलब कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री. 20 रुपीज़ प्राइस का 25% क्वेश्चन में बोला है, और सेकेंड केस में 3% डिस्काउंट मिल रहा है. और मैंने उधर देखो TCI में फॉर्मूला ही लिख दिया है, Q अपॉन 2 इंटू CI. तो आपका Q ये रहा 200 अपॉन 2 इंटू CI. सो इट इज़ 200 अपॉन 2 इंटू 5. So here it is 200 अपॉन 2 इंटू CI is 5. सेम में यहाँ पे 1000 अपॉन 2 इंटू 4.85. डॉली यहाँ पे भी 19.4 कैसे आया है? इट इज़ द डिस्काउंट विच आई हैव टेकन, 3% का डिस्काउंट. Once you are done, please let me know. Okay, Diksha is done. Mamta done. अंजलि, कनिष्का, शिल्पा, निशांक, डिम्पल, दीपिका, भूषण, दर्शिका,
ओके, लास्ट 1 more minute गाइस, जिसका नहीं हुआ है जल्दी करो. विजेता. Okay, now this was question number 10. Now we are on question number 11, that is working capital receivable management. वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी, बहुत बार आता है एग्जाम में. फिर हमने क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 कर लिया है और फिर नीचे डेरिवेटिव फॉरेक्स है. सो दिस इज द लास्ट वैरायटी व्हाट वी डू टुडे प्रायर टू द सेकेंड ब्रेक. डॉली, बिकॉज ऑफर इज कॉस्टली. डॉली, द ऑफर इज कॉस्टली. 41,325 है टोटल कॉस्ट. आज का लेक्चर ओवरडोज होने वाला है डॉली. आई थिंक सो पेट में चूहे दौड़ रहे लोगों के. क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट वन प्रायर टू द लंच ब्रेक, with which we will conclude the second part of today's session. A dealer having annual sales of 50 lakh extends a 30-day credit period to its debtors. Variable cost is 80% of sales and fixed cost is 6 lakh. हम ये सोच रहे हैं कि अपनी क्रेडिट पॉलिसी बदल दे, पर बदलेंगे तो क्या चेंज होगा. हमने 3 पॉलिसी दिमाग में रखी है कि अगर हम 45 डे क्रेडिट देंगे इंस्टेड ऑफ 30 डेज तो हमारा सेल्स 56 लाख 6 लाख से बढ़ जाएगा. 60 डेज तो 60 लाख हो जाएगा. 75 डेज तो 62 लाख हो जाएगा. सो हमारा प्री टैक्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 20%. हमें बेस्ट पॉलिसी बतानी है. सो हाउ डू दिस सम. आई गेस ऑल ऑफ यू रिमेंबर माई फॉर्मैट. सबसे पहले कॉलम होता है एग्जिस्टिंग, फिर 45 डेज, 60 डेज and 90 days. That is how we do this. 45, 60 and 90. सबसे पहले हम लिखेंगे converting days into years, that is 30 by 360 which is 1 by 12. Then 45 by 360. प्लीज़ अपने को यहाँ पे एक नोट लिखना है, assume 360 days a year. So everybody please do 45 by 360. (45 by 360). So you get 1 by 8. 60 by 360, 1 by 6. 90 by 360, 1 by 4. Now ये करने के बाद you will start with sales. हमारा एग्जिस्टिंग सेल्स है 50 लाख, 56, 60, 62. उसमें से माइनस वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ 80%. तो यू विल गेट कॉन्ट्रीब्यूशन. तो कॉन्ट्रीब्यूशन इज 10 लाख. $11.2 lakh, 12 lakh and 12.4 lakh. After the contribution you will subtract the fixed cost which is 6 lakh. So this is 4, 5.2, this is 6 and this is 6.4. So that is the profit. फिर आपका नाम लिखना है इंक्रीज इन प्रॉफिट विच इज अवर ए पार्ट.
तो 5.2 minus 4 that is 1.2. उल्टा आके माइनस करना है. 6 minus 4 that is 2 lakh. And same way 6.4 minus 4. ये हो गया मेरा पार्ट ए इंक्रीमेंटल प्रॉफिट. नाउ इंक्रीमेंटल कॉस्ट के लिए डेटर्स निकालना है. डेटर्स का फॉर्मूला इज नथिंग बट सेल्स इनटू क्रेडिट पीरियड. So 50 lakh divided by 12 is nothing but 4,16,667. This is 7 lakh. This is 10 lakh. And this is 15 lakh 50,000. Now you use percentage of rate of return which is given to be 20%. Am I right? It is 20, yeah. So 4,16,667 का 20% is 83,333. This is 1,40,000. This is 2 lakh. And this is 3,10,000. Now you will do incremental ROR. So 1,40,000 minus 83,333, which is 56,667. 2 lakh minus 83,333 and 3,10,000 minus 83,333. And that becomes your part B of the solution. Now you will find excess A minus B. So here the excess is 63,333. Here it is 83,333. And here it is 13,333. बोलो हाईएस्ट पॉजिटिव कौन है? हाईएस्ट पॉजिटिव, आई रिपीट, हाईएस्ट पॉजिटिव कौन है? 83,333. Therefore the best credit policy is 60 days. I repeat, the best credit policy is 60 days. That becomes my final answer. So please write this down, guys. That was the last question for the working capital. Yes, policy B, Diksha. Mamta, you are also right. 60 days is the final answer. Once you are done, let me know. Sonia written, very good, very fast, Sonia. Nishank is done, Dimple is done. Oh, sorry, Drashti, it is 75 days.
सो यू मेक वन मोर थिंग, इसको 75 करोगे, सो दिस बिकम्स 5/24. I repeat, it becomes 5/24. तो everything would remain the same. Only and only आपका डेटर चेंज हो जाएगा और मैं वो फिगर्स चेंज कर देता हूँ, बट इट विल नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द आंसर. सो इट इज 62 lakh. So this is 12,91,667 का 20%, which is 2,58,333. So this is 175. So this is 65. दृष्टि, मैंने क्वेश्चन के हिसाब से चेंज कर दिया. डॉली इज डन, साइली इज डन, उर्वी डन, विजेता डन. विजेता, इट इज 75/360. सो अभी आपको काटना है 15 5 15 24 कट करना है. जैसे स्कूल में सिखाते थे ना, टेबल लेके, अगर 15 का टेबल नहीं आता तो 5 के टेबल से करना, 2 के टेबल से पहले करना. सो इट इज 5/24 आएगा. अंडरस्टूड विजेता? Okay guys, then let's halt for the lunch break. Everybody is written. Kanishka done. Everybody is written, guys, those who are present. Shilpa, Bhushan, Dolly done, Saili done, Urvi done. Okay, great. Then let's halt for the lunch break. I think so it's 1:10, somewhere in the range of 1:10. So I think so half an hour should be more than sufficient. We should be starting our class at 1:45. I repeat, the next lecture starts at 1:45 p.m. I repeat, coming lecture at 1:45 p.m. Half an hour should be more than sufficient for a lunch time. 1:45 p.m. let's begin. Okay guys, see you at 1:45. Yes Anjali, agree with you.